Hello 6th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 3.b. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Let's start factor. A factor of a number is an exact divisor of that number. Clearly, a factor of a number is a number which divides that number exactly without remainder. सो एग्जाम्पल देखेंगे, फाइंड द फैक्टर ऑफ 42. सो 42 के फैक्टर हमें फाइंड करने हैं. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 42 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 42, 42 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 21, 42 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 14 एंड 42 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7. सो द फैक्टर्स ऑफ 42 आर, हमने किस किस से मल्टीप्लाई किया है इसको, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42. सो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. फर्स्ट पॉइंट, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो होता है बेटा वो हर नंबर का फैक्टर होगा. सेकेंड पॉइंट, एवरी नॉन जीरो नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. जैसे यहाँ पर हमने देखा 42 जो है इसका फैक्टर हमने जो फाइंड किए हैं उसमें 42 भी आया है. सो every non-zero number is the factor of itself. Now third point, the smallest factor of a number is 1. Okay, the largest factor of a number is the number itself. Fifth point, the number of factor of given number are finite. Sixth point is every factor of a number is either less than or equal to the number. Now multiply. A number is the multiply of each of its factor. It is obtained by multiplying the number with any whole number. These are also called skip counting number. See the example. Write first 5 multiplies of 4. So उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 multiply 1 equal to 4, 4 multiply 2 equal to 8, 4 multiply 3 equal to 12, 4 multiply 4 equal to 16 and last one is 4 multiply 5 equal to 20. So you see, this is a table of 4. Okay, now 4, 8, 12, 16 and 20 are the first 5 multiplies of 4. Simple. Now properties of multiplies. First point, every number is a multiply of itself. Okay, second point, every multiply of number is either greater than or equal to the number. Third point is the smallest multiply of a number is the number itself. Fourth point is the number of multiplies of a given number are infinite. Now next, perfect number. So perfect number find करने के लिए क्या करेंगे, if the sum of all the factor of a number is twice the number, then the number is called a perfect number. See the example. Factor of 6 are 1, 2, 3 and 6. So sum of the factor of 6, 1 plus 2 plus 3 plus 6 equal to 12. So 12 is the twice the number 6. Okay, so therefore 6 is a perfect number. Your right hand बेटा cool tips दी हुई है. There are only 2 perfect numbers between 1 to 100. कौन कौन से हैं वो, जो 1 और 100 के बीच में perfect number हैं, 6 and 28. Okay, now let's start our exercise 3.b. A part is select the correct answer. First question, which of the following is the perfect number? So here are 4 options, 0, 1, 9 and 6. So which is the perfect number? D part. Okay, C6 is the perfect number. Okay, now second question, the 7th multiply of 14 is, so 14 का 7th multiply कौन सा होगा, 14 7 जा 98. So A option is correct. Now third question, all the numbers having 5 or 0 in the ones place are the multiplies of, so answer is 5. So C option is correct. Now B part, solve the following. First question, write all the factors of the following. So इस क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो ए पार्ट इज 14. सो 14 के फैक्टर होंगे 1, 2, 7 एंड 14. ओके, नाउ बी पार्ट 20. सो 20 के फैक्टर होंगे बेटा 20 किस किस के टेबल में आ रहा है, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. ओके, नाउ सी पार्ट 48. सो 48 किसके मल्टीप्लाई में है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. ओके, नाउ सिमिलरली हम बाकी के पार्ट्स करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो ए पार्ट इज 6.
सो 6 के नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाइज कौन कौन से होंगे? 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। सिमिलरली हम 8 के फाइंड करेंगे। सो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। Now next is 17. So 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। Now similarly 35 के हम फाइंड करेंगे। So 70, 105, 140 and 175 is our answer. Question 3. Write all the factors of 28. Is it a perfect number? So firstly, factor of 28 are 1, 2, 4, 7, 14 and 28. Now the sum of factors of 28 is 56, which is twice the number 28. Therefore 28 is a perfect number. Okay. Now question 4. Write all the multiplies of 18 lying between 50 and 93. So 50 and 93 के बीच में 18 के मल्टीप्लाइज कौन कौन से हैं? आंसर इज 54, 72 and 90. Now question number 5. See in your book, list all the number less than 100 that are multiplies of. So A part is 5 and 7. So 5 and 7 के मल्टीप्लाइज कितने हैं 100 से छोटे? सो आंसर इज 35 and 70. ओके. बी पार्ट इज 2, 3 and 7. सो 2, 3 and 7 के मल्टीप्लाइज कितने हैं? सो आंसर इज 42 and 84. ओके. नाउ डी सी पार्ट 2, 5 and 7. सो इनके मल्टीप्लाइज कितने हैं? सो ओनली 1 है, 70. ओके. नाउ डी पार्ट 3, 4 and 10 के मल्टीप्लाइज कितने हैं 100 से छोटे? सो 1 ही है, वो क्या है? 60. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. राइट द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 1 फैक्टर. सो 1 इज आंसर. Now question number 7. Solve the following. See in your book A part. Is 15 a factor of 2255? So in this question बेटा आपको फर्स्टली डिवाइड करना है. अगर हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो वो उसके फैक्टर होंगे, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो वो उसके फैक्टर नहीं होंगे. सो ए पार्ट में आप देखेंगे फर्स्टली हमने डिवाइड किया. सो क्वोशिएंट इज 148 एंड रिमाइंडर इज 5. सो हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. Therefore 15 is not a factor. Similarly B part is 1331 a multiply of 11. So firstly we divide, then divide करने पर हमारा quotient है 121 and remainder is 0. Because remainder is equal to 0, therefore 11 is a factor. Similarly हम C and D part करेंगे. Now last question of this exercise, question number 8. Write T for true and F for false statement. A part is the number of multiplies of a given number are finite, so it's false. B part, every factor is less than or equal to the given number, so it is true. Now C part, 1 is not the factor of every number, so it is false. D part, a number is not a multiply of each of its factor, so it's false. Now E part, a factor of a number is an exact divisor of that number, so it is true. Now children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.